we were talking about the vapor pressure of solid liquid solution. Uh, we discussed till now that in case of pure solvent, vapor pressure is more, as more and more uh, component of solvent are available to vaporize, but as a non-volatile solute is added in that pure solvent, and since the non-volatile solute is added in the pure solvent, this non-volatile solute decreases the number of vapor of solvent, and hence there is lowering in the vapor pressure. Now we will conclude our whole discussion to a topic that pure solvent has vapor pressure always greater than the solution. Now moving towards the Raoult's law, applying Raoult's law over here in case of solid liquid solution. Let us suppose a binary solution solid liquid solution. Our solvent is present in liquid state while the solute is non-volatile solid. Solute over here is non-volatile solid, and these two combinedly form a binary solution. This is a container which contains the pure solvent. Here only the solvent particle is available over here. Let it is represented as, the solvent is represented as A. Since only the solvent particle is available over here, the vapor which would be found above the layer of this solvent, all this vapor will be contributed from this solvent only, because other than solvent no other molecule can be seen. So the vapor which is produced is of solvent only. Vapor is of solvent, and hence the vapor pressure will also be due to solvent. Vapor pressure due to solvent. But now what happened, we added some solute into it to make it a solution. Some solute is added into it, solvent particle, and some solute particle is introduced. These are some non-volatile solute particles. As the surface which is earlier been occupied by only the solvent, in this situation the surface is occupied by the both solvent and solute particles. This blue dot represents the solvent particle while the green dot is representing the solute particles. It means that there is very less number of vapor formed over here, because the surface is occupied by the non-volatile solute, and hence it is non-volatile. It would not lead to the formation of a vapor. So the vapor which will be produced over here, it will be of solvent only, but it will be in less number. Vapor जो यहाँ होंगे लेस नंबर में होंगे, एंड दैट्स वाई द वेपर प्रेशर प्रोड्यूस विल ऑल्सो बी लेस. वेपर प्रेशर जो होगा वो कंपेरेटिवली डिक्रीज होगा, because the surface is occupied by some solute as well as some solvent particle, and hence the lesser number of solvent would escape, and so the vapor pressure would be decreased. In case of this solution, let PA be the partial vapor pressure. This PA will be partial vapor pressure of solvent. Partial vapor pressure of solvent, and
PB. This is partial vapor pressure of solute. According to Raoult's law, we know that the partial vapor pressure in the solution is directly proportional to mole fraction of that component. So the partial pressure of A is Pa, and this partial pressure Pa will be directly proportional to mole fraction of A according to Raoult's law. राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होगा ए का यानी कि सॉल्वेंट का, वो उस सॉल्यूशन में जितने उसके मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो मूविंग फर्दर, removing this proportionality sign, equal, a constant will come over here denoted as Pa naught into Xa. This Pa naught, this is what? This is again a vapor pressure but of pure solvent. Pa naught is vapor pressure of pure solvent. In the same manner we can calculate for Pb also. अब हमें पता है कि ये जो सेकेंड कंपोनेंट है, जो सॉल्यूट कंपोनेंट है, वो सॉल्यूट कंपोनेंट नेचर में कैसा है? वोलाटाइल. एंड सिंस दिस component is volatile, it would not lead to the formation of vapor, and as its vapor would not be formed, so partial vapor pressure due to this would be zero. So we can say over here that Pb naught यानी कि ये vapor pressure of pure solute, if only solute particle would be present in a container, its vapor pressure would be zero. Why zero? Because this solute particle is non-volatile. It would not lead to the formation of vapor, and hence the vapor is not formed. How could it develop a pressure? Therefore we will say that Pb naught will be zero, and if Pb naught will be zero, then partial vapor pressure due to B is also zero because of the non-volatile nature this happens. Now calculating pressure total pressure. So P total is equal to what? Pa plus Pb. This Pa, as we have calculated, it is equal to Pa naught into Xa, and Pb is Pb naught into Xb. This would be the expression of P total. यानी solution जो भी हमने फॉर्म किया इस A और B को मिलाकर, उसके लिए जो P टोटल का एक्सप्रेशन डेवलप होगा, वो एक्सप्रेशन यहाँ पर ये होगा. एज दिस होल इज जीरो, ये पूरा जीरो है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस P टोटल इज इक्वल टू Pa naught into Xa, because here the pressure due to the solute that is second component B is zero. Why it is zero? Because it is non-volatile. इसमें वेपराइज करने की जब कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो फिर प्रेशर एक्सर्ट भी नहीं होगा. तो ये P टोटल का एक्सप्रेशन निकलेगा इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन वेयर द सॉलिड इज सॉल्वेंट, where the solid is solute, and which kind of solute? Non-volatile solute. तो यहाँ जो भी मतलब एक्सप्रेशन ये डेवलप होकर आया टोटल प्रेशर का, सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सॉल्वेंट के प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट जो हमने ले रखा है वो नेचर में नॉन वोलेटाइल है. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कितने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, घट गया, तो फिर अगेन इस पे आते हैं. इस कंटेनर में हमारा प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट. सिंस इट इज प्योर सॉल्वेंट, देयरफॉर द होल वेपर प्रेशर which would exerted over on the surface will be due to the solvent particle only, and it would be represented as Pa naught. Not यानी प्योर स्टेट में जब हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं तो उसे Pa naught से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं.
सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ पर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं और कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं. दीज आर सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट and since the volatile nature is only present in the solvent, so the vapor will be formed by the solvent only. The vapor which will be formed will be due to solvent only, and hence the pressure will be due to this solvent only, and it will be called as PA. Now this pressure in the case of solution will only be contributed by A. It means by solvent only. सॉल्यूट का कोई भी रोल नहीं है प्रेशर में, क्योंकि सॉल्यूट वेपोराइज ही नहीं कर पा रहा है. तो जो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट वुड बी व्हाट, जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में जो प्रेशर था सॉल्वेंट का वो कितना था, PA नॉट. और जो सॉल्यूशन फेज में आने पर जो यहाँ पर प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर इन द केस ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का डिफरेंस यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा P से. चेंज इन प्रेशर इट विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस PS, where this PA naught is pressure in the pure state while this PS is pressure in solution form. After lowering in vapor pressure, next topic is relative lowering. Relative lowering in vapor pressure, and this relative lowering in vapor pressure would be calculated as the lowering in vapor pressure जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, इसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ, तो जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था उसके प्रेशर के साथ. तो ये जो आएगा ये रिलेटिव लोअरिंग आएगा कि कितने वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया रिलेटिवली. Now some other important thing to keep in mind is that this relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, this is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और अंडरस्टूड भी है जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का, उतना ज्यादा रिलेटिवली हमारा जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो घटेगा, डिक्रीज होगा. तो मोल फ्रैक्शन के यहाँ पर इक्वल है. इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे टोटल मोल, ये एक्सप्रेशन आएगा. तो क्योंकि अभी जस्ट बात ये हुई कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर में, ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, एंड दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल जिसका भी निकालना है, यानी यहाँ पर सॉल्यूट है तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे टोटल मोल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल करते हैं. तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा PA नॉट बाई PA नॉट माइनस PS, सेम here also, Na plus NB by NB, PA naught by PA naught minus PS. This NB is for both the term, so we can write it as this only. हमने बस इसे स्प्लिट कर दिया, इस मैनर में भी इसे हम लिख सकते हैं. Now this would give us 1. Na by NB plus 1. Bringing this 1 to this side, it will become minus 1 over here.
minus 1. Here remains Na by Nb. LCM Pa naught पर जाएगा Pa naught plus Ps is equal to Na by Nb. This minus Pa naught plus Pa naught get cancelled. So the final is Ps by Pa naught minus Ps is equal to Na by Nb. Now lastly, once again we will take the reciprocal. After taking reciprocal, it will become this way, Nb by Na. So what we are getting over here, this is what? This is relative lowering in vapor pressure. This relative lowering in vapor pressure is directly proportional to mole of solute by mole of solvent. This relative lowering in vapor pressure is equal to the ratio of mole fraction, mole fraction not, mole of solute by mole of solvent. So this final expression we have to keep in mind. We can also say in this manner that relative lowering in the vapor pressure is equal to the ratio of mole of solute by mole of solvent. So till here we have ended with different types of solution, that is solid liquid solution, applying Raoult's law over here. Then we have gone through the liquid solution, and there also we applied the Raoult's law. Previously we discussed gaseous and liquid solution, and at that time we gone through the Henry law. uh, Till here we have taken different types of solution and discussed at it. Now we will go to different topic of this chapter, that is ideal and non-ideal solution in next lecture.